जगह यहाँ पर। बिस्मिल्लाह। हाँ कर ले वेट कर ले। नहीं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ला शै व बिक़ुव्वतिका अल्लती क़हरत बिहा कुल्ला शै व ख़ज़अ लहा कुल्लु शैइन व ज़ल्ल लहा कुल्लु शैइन व बिजबरूतिका अल्लती ग़लबत बिहा कुल्ला शैइन व बिइज़्ज़तिका अल्लती ला यक़ूमु लहा शै'उन व बिअज़मतिका अल्लती मलअत कुल्ला शै'इन व बिसुल्तानिका अल्लज़ी अला कुल्ला शै'इन व बिवजहिकल बाक़ी बअद फ़नाइ कुल्लि शै'इन व बिअस्माइका अल्लती मलअत अरकान कुल्लि शै'इन व बिइल्मिका अल्लज़ी अहात बिकुल्लि शै'इन व बिनूरि वजहिका अल्लज़ी अज़ाअ लहू कुल्लु शै'इन या नूरो या क़ुद्दूस या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अज़्ज़ुनूब अल्लती तहत कुल्लि सम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुन निक़म। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अज़्ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निअम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अज़्ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद दुआ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि कुल्ल ज़न्बिन अज़नबतुहु व कुल्ल ख़तीअतिन अख़्ताअतुहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैका व बिज़िक्रिका व अस्तशफ़िउ बिका इला नफ़्सिक व अस्अलुका बिजूदिका अन तुदनियनी मिन क़ुर्बिक व अन तुग़ज़ियनी शुक्रक व अन तुल्हिमनी ज़िक्रक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सुआल ख़ाज़िन मुतज़ल्लिलिन ख़ाशिइन अन तुसामिहनी व तरहमनी व तजअलनी बिक़िस्मिका राज़ियन क़ानिअ व फ़ी जमीइल अहवाल मुतवाज़िअ।
अल्लाहुम्मा व अस्अलुका सुआल मन इश्तद्दत फाक़तुह व अंज़ल बिका इंद शदाइद हाजतुह व अज़म फ़ीमा इंदका रग़बतुह। अल्लाहुम्मा अज़मु सुल्तानक वाला मकानक व खफिया मकरुक व ज़हरा अमरुक व गलबा कहरुक व जरत कुदरतुकल वलल युमनिकुल फ़िरार मिन हुकूमतिक। अल्लाहुम्मा ला अजदु लिज़ुनूबी गाफ़िरा वला लिक़बाइहि सातिरा वला लिशैइन मिन अमली अल क़बीह बिल हसन मुबद्दिलन गैरक। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका व बिहम्दिक ज़लमतु नफ्सी व तजर्रअतु बिजहली व सकनतु इला क़दीम ज़िक्रिका लि व मन्निक अलैया। अल्लाहुम्मा मौलाया कम मिन क़बीहिन सतरतुह व कम मिन फ़ादिहिन मिनल बलाया क़ल्तुह व कम मिन इसारिन वक़ैतुह व कम मिन मकरूहिन दफ़अतुह व कम मिन सनाइन जमीलिन लस्तु अहलन लहू नशरतुह। अल्लाहुम्मा अज़म बलाई व अफ़रत बि सूअ हाली व क़सरत बि अअमाली व क़ादत बि अग़लाली व हबसनी अन नफ़ई बअद अमली व ख़दअतनी दुनिया बिग़ुरूरिहा व नफ़्सी बिजनायतिहा व मिताली या सय्यदी फ़स्अलुका बिइज़्ज़तिका अल्ला यहजब अन्का दुआई सू अमली व फ़िआली वला तफ़ज़हनी बिख़फ़ी मत्तलत अलैहि मिन सिर्री वला तुआजिलनी बिल उक़ूबति अला मा अमिलतहु फ़ी ख़लवाती मिन सूइ फ़िअली व इसाअती व दवाम तफ़रीती व जहालती व कसरत शहवाती व गफ़लती व कुनिल्लाहुम्मा बिइज़्ज़तिका ली फ़ी कुल्लिल अहवाल रऊफ़ा व अलैया फ़ी जमीइल उमूर अतूफ़ा। इलाही व रब्बी मन ली गैरुक अस्अलहु कश्फ़ ज़ुर्री वन नज़रा फ़ी अमरी। इलाही व मौलाया अजरैत अलैया हुक्मन इत्तबअतु फ़ीहि हवा नफ़्सी वलम अहतरिस फ़ीहि मिन तज़य्यनि उदूई फ़ग़र्रनी बिमा अहवा व अस्अदहु अला ज़ालिकल क़ज़ा फ़तजावज़तु बिमा जरा अलैया मिन ज़ालिका बाज़ हुदूदिक व ख़ालफ़तु बाज़ अवामिरिक फ़लकल हम्दु अलैया फ़ी जमीइ ज़ालिका वला हुज्जत ली फ़ीमा जरा अलैया फ़ीहि क़ज़ाउक व अलज़मनी हुक्मक व बलाउक व क़द आतैतुक या इलाही बाद तक़सीरी व इसराफ़ी अला नफ़्सी मुअतज़िरन नादिमा मुनकसिरन मुस्तक़ीला मुस्तग़फ़िरन मुनीबा मुक़िर्रन मुज़इनन मुअतरिफ़न ला अजदु मुफ़र्रन बिमा काना मिन्नी वला मवज़न अतवज्जहु इलैहि फ़ी अमरी गैर क़बूलिका उज़री व इदख़ालिका इय्याया फ़ी साअति रहमतिक। अल्लाहुम्मा फ़क़्बल उज़री वरहम शिद्दत ज़ुर्री
वफ़ुक्कनी मिन शद्द वसाक़ी या रब इरहम ज़ुअफ़ा बदनी वरिक़्क़त जिल्दी वदिक़्क़त अज़मी या मन बदा खल्क़ी व ज़िक्री व तरबियती व बिर्री व तग़ज़ियनी हबनी लिब्तिदाए करमिक व सालिफ़ बिर्रिक बिया इलाही व सैयदी व रब्बी अतरा का मुअज़्ज़बी बिनार का बाद तौहीदिक व बाद मन तवालह क़ल्बी मिन मअरफ़तिका व लहजा बिही लिसान मिन ज़िक्रिक व अतक़दहु ज़मीर मिन हुब्बिक व बाद सिद्क़ इतराफ़ी व दुआए ख़ाज़िअन लिरबूबियतिक हैहात अंत अक्रमो मिन अन तुज़य्या मन रब्बैत व अन तुबअद मन अदनैत व तुशर्रिद मन आवैत औ तुसल्लिमा इलल बलाए मन कफ़ैत व रहमतहु अलैत शेरी या सय्यदी व इलाही व मौलाया अतुसल्लित नार अला वजूहिन खर्र लिअज़मतिका साजिदा वाला अलसुनिन नतक़त बितौहीदिक सादिक़तन व बिशुक्रिका मादिहा वाला क़ुलूबिन इतरफ़त बिइलाहियतिका मुहक़्क़िक़ा वाला ज़माइर हवत मिनल इल्म बिका हत्ता सारत ख़ाशिया वाला जवारिह सार इला औतान तअब्बुदिक ताया वशारद बिस्तिग़फ़ारिका मुज़इना माहा कज़न्नो बेक वला अख़बिरना बिफ़ज़लिका अन्का या करीम या रब्बे व अन्त तअलमु ज़अफ़ी अन क़लीलिम मिन बलाए दुनिया व उक़ूबातिहा वमा यजरी फ़ीहा मिनल मकारिहि अला अहलिहा अला अन्न ज़ालिका बलाउ व मकरूह क़लीलुम मक़सूर यसीरुन बक़ाहु क़सीरुम मुद्दतो फ़कैफ़ एहतिमाल लिबलाइल आख़िरा व जलील वक़ूइल मकारिहि फ़ीहा वहुवा बलाउन ततूल मुद्दतो व यदूम मुक़ामो वला यख़फ़फ़ु अन अहलिहि लिअन्नहु ला यकूनु इल्ला अन ग़ज़बिका व इंतिक़ामिका व सख़तिका व हाज़ा मा ला तक़ूमु लहु अस्समावातु वल अर्ज़ या सय्यदी फ़कैफ़ ली व अना अब्दुका ज़ईफ़ुज़ ज़लीलुल हक़ीरुल मिस्कीनुल मुस्तकीन या इलाही व रब्बी व सय्यदी व मौलाया लिअय्युल उमूर इलैका अश्कू व लिमा मिनहा अज़िज्जु व अबकी लिअलीमुल अज़ाब व शिद्दते अम्ल तूलिल बला व मुद्दते फ़लन सय्यरतनी लिल उक़ूबात मादाइक व जमात बैनी व बैन अहल बलाइक व फ़र्रक़त बैनी व बैन अहिब्बाइक व औलियाइक फ़हबनी ला इलाही व सय्यदी व मौलाया व रब्बी सबरतु अला अज़ाबिक फ़कैफ़ अस्बिरु अला फ़िराक़िक वहबनी सबरतु अला हर्रि नारिक फ़कैफ़ अस्बिरु अनिन नज़र इला करामतिक अम कैफ़ अस्कनु फ़िन्नार व रजाई अफ़्वक फ़बिइज़्ज़तिका या सय्यदी व मौलाया
उक़्सिमु सादिक़न लइन तरक्तनी नातिक़ा ला ज़िज्जन्ना इलैका बैना अहलिहा ज़जीजुल आमिलीन वला उसरुखन्ना इलैका सुराखल मुस्तसरिखीन वला अबकियन्ना इलैका बुकाल फाक़िदीन वला उनादियन्नका ऐन कुन्त या वलियल मुअमिनीन या गायत आमालिल आरिफीन या गयासल मुस्तगीसीन या हबीब क़ुलूबिस सादिक़ीन व या इलाहल आलमीन अफतराक बिसुबहानक या इलाही व बिहम्दिका तस्मौ फीहा सौता अबदिम मुस्लिमिन सुजना फीहा बेमुखालिफत व ज़ाक़ता मज़ाबिहा बेमासियतिही व हुबिस बैना अतबाक़िहा बेजुर्मिही व जरीरतिही वहुवा यज़िज्जु इलैका ज़जीज़ल मुअम्मिलिन लिरहमतिक व युनादीका बिलिसान अहले तौहीदिक व यतवस्सलु इलैका बिरबूबियतिक या मौला या फ़कैफ़ यब्क़ी फ़िल अज़ाब वहुवा यरजू मा सलफ़ मिन हिल्मिक अम कैफ़ तुलिमहुन नारो वहुवा यअमलु फ़ज़लक व रहमतक अम कैफ़ा युहरिक़हु लहीबुहा व अन्त तस्मउ सौतह व तरा मकानहु अम कैफ़ा यश्तमिलु अलैहि ज़फ़ीरुहा व अन्त तअलमु ज़ौफ़ा अम कैफ़ा यतक़ल्क़लु बैना अतबाक़िहा व अन्त तअलमु सिद्क़ा अम कैफ़ा तज़जरहु ज़बानियतुहा वहुवा युनादीका या रब्ब अम कैफ़ा यरजू फ़ज़लका फ़ी इत्क़िही मिनहा फ़ततरुकहु फ़ीहा हैहात मा ज़ालिका ज़न्नु बिक वलल मअरूफ़ु मिन फ़ज़लिक वला मुश्बिहुन लिमा आमलतु बिहिल मुवह्हिदीन मिन बिर्रिक व एहसानिक फ़बिल यक़ीन अख़्ता लौला मा हकमत बिही मिन ताज़ीब जाहिदीक व क़ज़ैत बिही मिन इख़लाद मुआनिदीक लजअल्तन नार कुल्लहा बरदन व सलामा वमा कान लिअहदिन फ़ीहा मुक़र्रन वला मुक़ामा लाकिन्नका तक़द्दसत अस्माउक अक़समत अन तमलअहा मिनल काफ़िरीन मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन व अन तुख़ल्लिद फ़ीहल मुआनिदीन व अन्त जल्ल सनाउक क़ुल्त मुब्तदिअन व तव्वलत बिल इन्आम मुतकर्रिमा अफ़मन कान मुअमिनन कमन कान फ़ासिक़ा ला यस्तऊन इलाही व सय्यदी फ़अस्अलुका बिल क़ुद्रतिल्लती क़द्दरतहा व बिल क़ज़िय्यतिल्लती हतमतहा व हकमतहा ग़लबत मन अलैहि अजरैतहा अंत हबल फ़ी हाज़िहिल लैला व फ़ी हाज़िहिस साअ कुल्ल जुर्मिन अजरमतुहु व कुल्ल ज़न्बिन अज़नबतुहु व कुल्ल क़बीहिन असररतुहु व कुल्ल जहलिन अमिलतुहु कतमतहु औ अअलनतुहु अख़फ़ैतहु औ अज़हरतुहु व कुल्ल सय्यअतिन अमरत बिइस्बातिहल किरामल कातिबीन अल्लज़ीना वक्कलतहुम बिहिफ़्ज़ि मा यकूनु मिन्नी व जअलतहुम शहूदा अलैया मा जवारिही व कुन्ता अंतर रक़ीब अलैया मिन वराइहिम वश्शाहिद लिमा खुफ़िया अन्हुम व बिरहमतिका खुफ़ैता व बिफ़ज़लिका सतरता
वअन तुवफ़्फ़िर हज़्ज़ मिन कुल्ल खैरिन अंज़लता औ एहसानिन फ़ज़्ज़लता औ बिर्रिन नशरता औ रिज़्क़िन बसत्ता औ ज़न्बिन तग़फ़िरु औ ख़ताइन तस्तरो या रब्बे या रब्बे या रब या इलाही व सैयदी व मौलाया व मालिक रिक़ी या मन बेयदिही नासियती या अलीमन बेज़ुर्री व मस्कनती या खबीरन बेफ़क़री व फ़ाक़ती या रब्बे या रब्बे या रब अस्अलुका बिहक़्क़िका व क़ुद्सिका व आज़म सिफ़ातिक व अस्माइका अन तजअल औक़ाती मिनल लैल वन्नहार बिज़िक्रिका मअमूरा व बिख़िदमतिका मौसूला व आमाली इंदका मक़बूला हत्ता तकूनु आमाली व औरादी कुल्लहा विरदन वाहिदा व हाली फ़ी खिदमतिका सरमदा या सय्यदी या मन अलैहि मुअव्वली या मन इलैहि शकौत अहवाली या रब्बे या रब्बे या रब कव्वे अला खिदमतिका जवारिह वजदुद अलल अज़ीमत जवानिह वहबली हबल अलजिद्द फ़ी खशियतिका वद्दवाम फ़िल इत्तिसाल बिखिदमतिका हत्ता अस्रहा इलैका फ़ी मयादीन साबिक़ीन व उसरिया इलैका फ़िल बारिज़ीन व इश्ताक़ इला क़ुर्बिका फ़िल मुश्ताक़ीन वादनो मन्नका दुनुव्वुल मुख़लिसीन व खाफ़का मखाफ़तल मुक़िनीन व अज्तमिअ फ़ी जवारिहि माल मुअमिनीन अल्लाहुम्मा व मन अरादनी बिस्सूइन फ़अरिद व मन कादनी फ़किद वजअलनी मिन अहसनि अबीदिका नसीबन इंदिक व अक़रबहिम मंज़िलतम मिन्क व अख़स्सिहिम ज़ुल्फ़तन लदैक फ़इन्नहु ला यनालु ज़ालिका इल्ला बिफ़ज़लिक व जुदली बिजूदिक वातिफ़ अलैया बिमजदिक वहफ़ज़नी बिरहमतिका वजअल लिसानी बिज़िक्रिका लहजा व क़ल्बी बिहुब्बिका मुतय्यमा व मुन्ना अलैया बिहुस्नि इजाबतिक वक़िल्नी असरती वग़फ़िर ज़ल्लती फ़इन्नका क़ज़ैत अला इबादिका बिइबादतिक व अमरतहुम बिदुआइक व ज़मनत लहुमुल इजाबा फ़इलैका या रब्बि नसब्तु वजी व इलैका या रब्बि मददतु यदी फ़बिइज़्ज़तिका अस्तजिब लिदुआई व बल्लिग़नी मुनाया वला तक़्तु मिन फ़ज़लिका रजाई वक्फ़िनी शर्रल जिन्न वल इंस मिन आदाई या सरीअर रज़ा इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ फ़इन्नका फ़अ्आलुन लिमा तशा या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफ़ा व ताअतुहु गिनन इरहम मन रासु मालिहि रजा व सिलाहुल बुका या साबिग़ुन निअम या दाफ़िअन निक़म या नूरल मुस्तहविशीन फ़िज़्ज़ुलम या लिमन ला युअल्लम सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वफ़अल बीमा अन्त अहलु वला तफ़अल बीमा अना अहलु व सल्लल्लाहु अला रसूलिहि वला इम्मतिल मयामीन मिन आलिहि
वसल्लमा तस्लीमन कसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या दाइमल फज़्ल अलल बरिया, या बासितद यदैन बिलअतिया, या साहिबल मवाहिब सनिया, सल्लि अला मुहम्मदिन व आले खैरल वरा सजिया, वग़फिर लना या ज़ल उला फ़ी हाज़िल अशिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुमिनीन, एक सूरह फ़ातिहा और 3 सूरह इखलास पढ़ के तमाम जुमला हाज़िरीन महफ़िल के जो लोग सुन रहे हैं उनके तमाम शोहदा मरहूम मराजे के साथ इन अस्मा को शामिल कर लें फ़ातिहा में। मलिक सुल्तान आदिल का और तमाम जुमला मुमिनीन। फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। 5 मरतबा सूरह शिफा की तिलावत कर लें साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दअ व यक्शिफुस सू। 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। या परवरदिगार, इस सूरह शिफा के वसीले से 12 हमचर्द मासूमीन के सदक़े तमाम जुमला मुमिनीन जो बीमार हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं, उनकी बीमारियों को, उनकी परेशानी को दूर फरमा। ख़ास तौर पर जिनके लिए जिनकी दरख्वास्त की गई है उनको ख़ास तौर पर शामिल कर लें और मिर्ज़ा अली अतहर का नाम उसमें ज़रूर शामिल रखें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
एक दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आबाद हुई करबो बला, उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं। आबाद हुई करबो बला, उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं। ज़ैनब को नरासाया मुहर्रम का महीना, बर्बाद हुई मैं। आबाद हुई करबो बला, उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं। एक दिन था कि किस शहर की मैं करती थी शाही। एक दिन था इस शहर की मैं करती थी शाही, और आज तबाही। बेगुसर पड़ा मोहर नबूवत का नगीना, बर्बाद हुई मैं। आबाद हुई करबो बला, उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं। किस लाश पे रोऊं किसे छोड़ूं मैं बरादर, लाशें हैं 72। किस लाश पे रोऊं किसे छोड़ूं मैं बरादर, लाशें हैं 72। हद यह है कि रोने की इजाज़त भी मिली ना, बर्बाद हुई मैं। आबाद हुई करबो बला, उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं। असग़र का गला भाई का सर, सीनाए अकबर, सब गोहर चादर। असग़र का गला भाई का सर, सीनाए अकबर, सब गोहर चादर। इस दाश्त में लूटा गया ज़ैनब का खजीना, बर्बाद हुई मैं। आबाद हुई करबो बला, उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं। माएँ भी ना पहचान सकी बच्चों के चेहरे, बिखरे हुए सहरे। माएँ भी न पहचान सकी बच्चों के चेहरे, बिखरे हुए सहरे। है खून के दरिया में गरीबों का सफीना, बर्बाद हुई मैं। आबाद हुई करबो बला, उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं। एक आग है खैमों में क़यामत का है समा, गाजी तू कहाँ है। एक आग है खैमों में क़यामत का है समा, गाजी तू कहाँ है। देखो तो रिदा छीन गया शिमर कमीना, बर्बाद हुई मैं।
आबाद हुई कर्ब बला, उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं। चादर छिन दूर दे लिए अब जुल्म न ढाओ, बाबा से मिलाओ। नेज़े के तरे बैठ के रोती है सकीना, बर्बाद हुई मैं। आबाद हुई कर्बला, उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं। किस लाश पे रोऊं, किसे छोड़ूं मैं बरादर, लाशें हैं 72। हद ये है कि रोने की इजाज़त भी मिली ना, बर्बाद हुई मैं। आबाद हुई कर्बला, उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। चंद ऐलानात की आपको सहमत है। सबसे पहले हमारा ऐलान जो है आज अय्याम अज़ा के हवाले से है। अय्याम अज़ा की इंशाअल्लाह मजालिस कल से हमारी अय्याम अज़ा की मजलिस का सिलसिला शुरू होगा, जिससे इंग्लिश की स्पीच से जनाब हमारे गेस्ट स्पीकर जो ऑटवा से आए हुए हैं अली इस्लामी, वो ख़िताब फरमाएंगे। उनकी जो मजलिस है वो इंशाअल्लाह 7:30 पे शुरू होगी और उसके बाद नमाज होगी। इंग्लिश की मजलिस के बाद नमाज इंशाअल्लाह। उसके बाद हमारी उर्दू की स्पीच जो है वो नमाज के बाद मजलिस शुरू होगी और उससे जनाब फ़रत अब्बास साहब ख़िताब फरमाएंगे जो कि हुस्न से तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। ये अय्याम अज़ा का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगा 10 मुहर्रम तक और इंशाअल्लाह उर्दू मजलिस का सिलसिला जारी रहेगा सोहम की मजलिस तक। तो आप लोग से पाबंदी वक्त के साथ शिरकत की इस्तदा है। I'd like to thanks to Maulana Ali Ismaili for coming up for our request, for his presence. I request you to have a Baba's Iblan Salawat. आज की मजलिस जो है वो एक मखसूसी तौर पे परचम हमारे जो आलम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम है इसकी चेंजिंग के हवाले से है और इंशाअल्लाह ये मजलिस जो है बाहर हमारे लॉन में होगी। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप प्रोसीड करें लॉन की तरफ। मौलाना वहाँ खिताब फरमाएंगे और वहीं पे ही वहाँ नौ और मातम होगा इंशाअल्लाह। तो बिस्मिल्लाह। खामोश है मजलिस शुरू हो गई भाई। बिस्मिल्लाह।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is an honor to be serving the community here at Al-Mahdi Center this year for Muharram. Although our program was scheduled for tomorrow and today's lecture was on a short notice, I just arrived at 6:30 p.m. and they told me they don't have no speaker, and I didn't have much time to prepare for this speech, but I've tried my best to collect some notes, inshallah, and forgive me if it is short and unprepared, but inshallah, I hope it will be beneficial. Our Imam Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq alayhi salam, Allahumma salli ala. In Ziyarat Arba'in, inshallah you have gone to Karbala for Arba'in. If not, I hope you do go and Allah gives you the tawfiq to be there. If you remember, in that particular text of Ziyarat Arba'in, which is narrated to us by Imam as-Sadiq alayhi salam, the Imam, in a phrase, he describes the goal and message of Imam Hussein. Why Imam Hussein was martyred? Why did he sacrifice himself? It is very interesting. The Imam says, وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. He describes Imam Hussein, his grandfather, and says, "O Allah, my grandfather Hussein has given the blood of his heart for you." Muhja is the blood in the heart, which is extracted directly from the heart. That's called muhja. He gave his blood from his heart for you. Why? What was the reason?
in order to rescue your ibad, your servants, your creation, from ignorance, and to guide them, those that who have been deviated. This was why he sacrificed himself for Allah, to guide the ignorant people. This was the message. This was the goal of Imam Hussein. Now, what we do every year when we commemorate Ashura and Muharram, when we revive this incident, this tragedy, every year when the time comes, they say, instead of emotionally trying to make people cry and evoking emotions and describing the wounds of Imam Hussein, instead of trying to count his wounds and elaborate on those scars of his body, let's try and elaborate and reflect on his message, his goal. Let's take it to a rational aspect. We should try to examine and try to elaborate on the rational part of Imam Hussein's message. Not evoking emotions and crying for him and describing his wounds, what happened to him in this incident, what kind of scars he had, and always elaborating on his thirst. That's not what he wants. Like a famous person that many people follow until today, he passed many years ago, 50 years ago. He has a famous quote where he says, "It is unfortunate that instead of elaborating and reflecting on the message of Imam Hussein, we are counting his wounds and his scars." What we do in our masa'ib and our eulogies, when we describe the tragedies he went through, and we cry for what happened to our Imam and his family, this person says, this is all we have done. Instead of that, we should reflect on his message. What was his goal? That's what we should work on. Now, what is our duty when we want to revive this tragedy? When we want to mention Imam Hussein, when we want to commemorate Ashura, should we work on the emotional aspect? Crying, weeping, mourning, masa'ib, eulogies? Or should we take it rationally and examine and emphasize on his goals, politically, historically? What should be done? What should we emphasize on? Let me give you an example by the famous poet who we call Mawlavi or Maulana, or in English they call Rumi, the famous poet Rumi. He has an interesting poem where he says there were two men. One of them slapped the other behind his neck. And that slap, that strike, was so perfect, it made a loud noise, as he describes it, the noise of taraq. He slapped him on the neck, and there was a loud noise, and he was very pleased with that slap, that he accomplished it very perfectly, and it made a bit loud noise. So he says, the person who was beaten and slapped, he turned back and he wanted to respond and beat that person, but
he calmed him down by saying, wait just a minute. Before you want to beat me up, I have a question. You know the noise that you just heard, that loud noise, taraq? I want to ask you a question. Let's think about it. Where is the source of that noise? Where did it come from? Just think about it. Did it come from my hand or from your neck? Which one is it? That person was rubbing the back of his neck and looking at that person in agony, and he was bewildered. What are you talking about? He said, no, it was a loud noise. Let's examine it. Was it from your neck or from my hand? Which one? He said, look, I am burning here. I can't think about where the source of the noise was. Which one was it? You could think about that, but I am in no position to talk about that when I'm burning and I'm in pain. When we want to talk about Imam Hussein, the mu'min, as the Prophet describes, he says the mu'min is in pain for the death of Imam Hussein. The mu'min is burning for the tragedy of my grandson, Imam Hussein. This is before the Imam was martyred. It's when the Prophet was alive. He said, إِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُ أَبَدًا. In the hearts of a mu'min is a fire because of the tragedy of Hussein, the death of my grandson Hussein. That tragedy, that incident, it let up a fire which will not subside and die out. Abada, it will never subside. It will never go out. There's a fire in every mu'min's heart because of the tragedy of Hussein. If you are a mu'min, if your heart is burning and you're in pain because of what you heard about Imam Hussein and your master, then you cannot forget that. You're burning. You want to cry. You want to show your emotions. You can't just examine the tragedy of Karbala rationally, historically, and politically. No, that's not enough. You're in pain. That's a sign of a mu'min. If this person who claims he is a follower of Imam Hussein, which he does claim so, if he's a mu'min, he should be burning. And that fire, the fruit of that fire, it will show itself when a person wants to cry and weep and mourn for his master. Yes, we should have that intellectual discussion about Imam Hussein every year. We should teach our youth about the goals of Imam Hussein, his message. We have to reflect on the message every year. We have to repeat it. Even those who know, the elders, they need to we need to remind them every year. That is necessary. But we cannot forget the emotional part, evoking the emotions through mourning, crying, weeping, azadari, and all that other emotional things that we do for Imam Hussein. Let me prove this to you by what Ahlul Bayt did themselves. You see, when Imam Hussein alayhi salam when he was going from Medina, he was confronted by his brother Muhammad ibn Hanafiyyah. And he asked him, why are you going to Kufa? They're going to kill you.
He said, Sha Allah an yarani qatila. Allah wants to see me dead and killed and martyred. He said, well, why are you taking the women and children with you? If you're going to be killed, why are you taking the women and children? They don't usually do that. When they go to war, they don't take family with them because they're going to get taken as captives if they lose that battle or war. The Imam replied, Sha Allah an yarahunna sabaya. Allah wants to see them as captives. Why? Because when the Imam was martyred on the day of Ashura in that desert of Karbala, there was no one there except the enemy. Who is going to report what happened in Karbala? Who is going to spread the message of Imam Hussein? It's the captives, the women and children. That is their responsibility. And that is what they did. They started from Kufa when they took them to Kufa. We had sermons by our Miss Lady Zainab Salamullahi alayha and her sister Kulthum. They gave sermons in the city of Kufa on the camels they were riding in order to inform the people of Kufa what has happened, what has occurred, what happened to Hussein, your master, the grandson of your prophet. What was his message? Then they took them to Sham. Again, Lady Zainab, she delivered a sermon in that courtyard of Yazid. And Imam Zainul Abidin alayhi salam, he also delivered a sermon. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And it was then that the people of Sham knew what the story was about. These are not Khawarij, these are not kuffar and infidels. No, these are the Ahlul Bayt and the household of their prophet. And what Imam Hussein was killed for, what the message was, they found out when the sermons were delivered. This is the rational part. This is what they did. Sermons. They talked to people. They informed them what's going on. They have to know. There was no crying and weeping and in the manner of a ceremony and a majlis. No, there was no majlis before that. It was all after that sermon of Imam as-Sajjad that everything started. In Sham, it began in Sham, the capital of the Umayyad dynasty. It began there. After Yazid, the people, they accused Yazid of betrayal and killing the Prophet's household. And they were angry of what he had done. He changed his position. He said, no, it was all Ibn Ziyad. I'm taking no fault in this. This is Ibn Ziyad's mistake. Suddenly everything changed. And what should they do? Okay, we are going to mourn Imam Hussein here in Sham. He gave a place to the Ahlul Bayt for them to do the Azadari in Sham, in Syria. And they were free to do so. And even the people of Sham and the family of Yazid, they joined them in mourning Imam Hussein in Sham, in Syria, in Damascus. They started there. Some say it was 3 days. Some say it was 7 days that they held the majalis of Imam Hussein, and all they would do is mourn and cry and weep. And as that person says, count the wounds and scars of Imam Hussein, what happened to him. You know what happened afterwards? After the 7 days or 3 days,
The advisors of Yazid, they came to him. They told him, if you don't want the people of Sham, your people, to rebel and rise against you, you have to send them out of Sham. Return them back to where they came from. Because what they are doing here is changing people. They're turning against you. The same people that fought in Siffin with Ali ibn Abi Talib alayhi salam. These same people are turning against you. With what? These two actions. The sermons and the azadari and crying and weeping. There was always the rational part and the emotional part. These two were there. These two are the wings of spreading the message of Imam Hussein. And these are necessary until today when we revive this incident and we commemorate Ashura and Muharram every year. We need these two wings to spread the message of Imam Hussein. We need a balance between these two. We could not only stick to one or emphasize on one of them, make one of them bold and the other light. No, we need both. This is the balance that is needed to spread the message. What was the message? لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ, to save people from ignorance. This is what we're doing today when we lift this flag. This is a sign that we want to revive this cause. And our goal is the goal of Imam Hussein. We want to rescue people from ignorance. But we have to start from within our own families and children. Right? The Quran says, قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. Save yourselves and your family from the hellfire. Yourselves and family. Save yourselves. Then you go to others. You want to save your children. You want to rescue them from ignorance. This is our goal. So you start from here, from the young ones, and you give them roles to play. You must attract them to this community, to these programs. You must give them responsibilities. Or else if you're doing everything and they're only watching and you're doing it your way, not their way, then they're not going to be attracted. They're not going to be interested in what's going on here in these days. I've been to communities where unfortunately I was delivering a speech and the lecture was in Farsi. It was supposed to be in bilingual English, Farsi, English for the youth, Farsi for the elders. But I saw that there were no youth, no children, only the elders. So it became Farsi only. And I was surprised. I asked some of the parents, I asked one of them, do you have children? He said, yes. I said, where are they? How old are they? One is 10, one is 12, 14, 8, different ages. Where are they? They're at home. Why don't you bring them here? Oh, they're studying. They have school. Tomorrow they have homework. I said, wow, it's so important for you, their education, their career, but what about their religion, their deen? Isn't that important? He said, well, I can't force them. I do ask them to come. I encourage them to come. But, they complain. They say, oh, I have homework. I would like to stay. I give them free will. He was a proud father. I give my children free will to decide. I can't force them. I said, don't you force them to go to school? If a child doesn't want to go to school,
Don't they force the child? Where's the free will? Why are you forcing him to continue his education? Because it's important. You realize that. And you should. But you don't realize how important these programs are, how important these 10 days are. You don't realize that. We have a goal here. It's the goal of Imam Hussein, to save our children and others from ignorance, to teach them. Imam Hussein is a lantern of guidance. The Prophet said that I saw written on the Arsh, the throne of Allah, written this sentence, Inna al-Hussein misbahu hudan wa safinatu najat. Allahumma salli. Hussein is a lantern of guidance and a ship to rescue others who are drowning in the seas of ignorance and sin and deviation. He rescues them. They have to come here to be rescued, to learn. This is what Imam Hussein does. This was his goal, and this is what happens here. But in order for those children to come here, the parents, the elders, they must have a complete understanding about what is going on here. What are our goals? What do we want to accomplish? Is it just emotional? Just to make me feel good? Oh, Muharram has come. I want to shed some tears again. That's good. But that's not enough. The parents have to understand what the children need. I had one father who, he was as we call the maddah. What is the term, Hussein? He was the one in charge of eulogy. He recited eulogy. He was the only one in that center. And on the day of Ashura, he was there every night, but on the day of Ashura, at daytime, at noon, when we expected him to be there and recite the eulogy and the Marsiyah, he wasn't there. He was absent. When I saw him that night, Sham Ghariban, I asked him, where were you today? You should have come. He said, oh, I had taken my children to school. I couldn't come. I'm excused. On the day of Ashura. And you know what was interesting was, it was a Sunday. I said, today's Sunday. It only happens once in a few years that Ashura is on a Sunday or Saturday, it's a weekend. What are you talking about? He said, yes, Sunday school. I took them to Sunday school. You took them to Sunday school on Ashura? This is a parent that doesn't realize anything. But when a parent does know what is good for his children and is working on it, and he wants to achieve what is meant to be taught here, it's the children that need to be attracted to these programs. It's the people responsible here. They have a big role. They have to attract the youth, the children to these programs. It should not be focused on what they want, what they desire, how they used to revive these days, how they used to do azadari their own way. They have to do it in a way that the children want. Our time is up. Just a few words of zikr musibat. It was like a day, maybe today or tomorrow, just before Muharram, on the eve of Muharram, when Rayyan ibn Shabib, one of the companions of Imam Riza alayhi salam, came to him and said, the Imam
said to him, "Oh Rayyan, do you know what day is it? What are these days? Do you know about the day of the Muharram, this month? The month that is coming. Do you know what happened?" So the Imam starts telling Rayyan about what happened in Muharram, who was killed in this month. And what is our responsibility towards him? The Imam says, "O Rayyan, if you cry for my grandfather Hussein and you weep until your teardrops flow on your cheeks, do you know what is the reward? All your sins will be erased. All your sins will be forgiven, whether they are small or great. This is the reward if you cry for my grandfather Hussein on these days." Then he says to him, "You know, any sadness that occurs, any tragedy that you go through, anything that makes you want to cry, relate it to Hussein. Make it an excuse to cry for my grandfather Hussein." He says, "Ya ibn Shabib, in kunta bakiyan li shay'in fabki lil Hussein." If you want to cry for anything, your father, your mother, your brother, your child, instead cry for Hussein. Find an excuse to cry for Hussein, because no one's tragedy, no one's musibah is comparable to what happened to Hussein. You know what happened to Hussein, Ya ibn Shabib? I wouldn't have dared to describe the death of Imam Hussein in this manner if it weren't for the own words of Imam Riza alayhi salam. The exact words of the Imam. I thought it would be a dishonor to Imam Hussein to say that he was killed in this manner, but it is his grandson, our Imam, saying these words. So I'll tell you what he said. He said, "Ya ibn Shabib, you must cry for my grandfather Hussein, because innahu dhubiha kama yudhbahu al-kabsh." He was slaughtered like they slaughter an animal. Cry for him because he was not slaughtered like a human being. The Arabs slaughtered, it was normal. They cut off the heads, they severed the heads after they were dead. The enemy was dead. They did slaughter the head, but they weren't alive. It's only animals that they are slaughtered when they are alive. He was slaughtered just like an animal is slaughtered. Then the Imam says to him, "You know why he is slaughtered like an animal?" This is one reason. The second reason, that he relates the Imam's death in this manner. He said it's because after the animal is killed, the animal is cut into pieces. This is why he resembles the death of Imam Hussein to a slaughtering an animal. And the third resemblance is this: when someone slaughters an animal, no one protests. No one says, "Why are you doing this? Why are you killing this animal?" No one opposes to you. This is how thy father, my grandfather Hussein, was slaughtered. No one said, "Why are you doing this?" That is why our mistress Zainab, when she came on Tell Zainabiyya, on that hill, and she saw her brother surrounded by the enemy, and everyone was striking at him, she was surprised when she said to Umar ibn Sa'd, "Ya Umar, wayhak, ayuqtalu Abu Abdullah wa anta tanzuru ilayh." She said, "How can you watch them and see and look at them kill Imam Hussein? Are you looking at this scene? Are you standing there and watching what they're doing to Hussein?" Then she cried out, "Ama fikum Muslim? Is there no Muslim among you? How can you watch this?"
She saw there was no use in crying and asking for help. So she looked towards Medina and she cried out to her grandfather. She said, Ya Rasulallah, Salla alayka Malikus Sama. Oh grandfather Rasulallah, you should be here and see what they're doing to your grandson Hussein. هذا حسينك مرمل بالدماء. This is your grandson drowning in his own blood. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. दरिया से लौट कर न अलमदार आ सके, ओ दरिया से लौट कर न अलमदार आ सके, दरिया से लौट कर न अलमदार आ सके, अफसोस बेकसों के न गमखार आ सके, दरिया से लौट कर न अलम। सब जवाब दें। दरिया वो 3 दिन की प्यास, वो गर्मी लबे फरात, वो 3 दिन की प्यास, वो गर्मी लबे फरात, आले रसूल प्यास न अपनी बुझा सके, आले रसूल प्यास न अपनी बुझा सके, अफसोस बेकसों के ना गमखार आ सके, दरिया दरिया झुक कर कमान हो गई मजलूम की कमर, झुक कर कमान हो गई मजलूम की कमर, अब्बास तेरा लाशाना सर पर उठा सके, अब्बास तेरा लाशाना सर पर उठा सके, अफसोस बेकसों के ना गमखार आ सके, दरिया से लौट कह कर जहां से चल दिए अब्बा से बावफा, कह कर जहां से चल दिए अब्बा से बावफा, आका मेरा जनाजा न क़ैमों में जा सके, आका मेरा जनाजा न क़ैमों में जा सके, अफसोस बेकसों के ना गमखार आ सके, दरिया दरिया से पानी लाते गिरा देते थे लहीं, दरिया से पानी लाते गिरा देते थे लहीं, असग़र को एक बूंद न पानी पिला सके, असग़र को एक बूंद न
पानी पिला सके। अफसोस बेकसों के ना गमखार आ सके। दरिया से लौट हेलो إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير الأمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Should I put this on? Just let me. Okay. Switch. No, there we go. Should it should be on the ground. Okay.
Should I do the iqam? Okay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوضى بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عشاء. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بموضع الرزق وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه البلدان فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري في سحل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبلي من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله واجعل يا ربي رزقك لي واسعا
ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا، ولا تعنني بطلبي ما لم تقدر لي فيه رزقا، فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله واجد على عبدك بفضلك، إنك ذو فضل عظيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به.
السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الزكي الناصح الأمين. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم، وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، والهقهم بدرك الجحيم. السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا. كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة القائم يا صاحب الأسر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن وكعبة الإيمان، وإمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك، وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ورحمة الله وبركاته.